Welcome to another live stream. Let's do some analysis on gold. This is a 30-minute time frame. Just to keep things simple, we'll do top-down analysis. 4 hour, we found some sort of support. Yeah, that should be good. It's just been consolidating for last full London session. So let's see. If price can close in this area, then I could anticipate buys up to this wick or even to that area. Yeah, I think that should work out. Where's my arrow? Yeah, if price can close around this area, that would be great. Yep. I think that would be good. For sells. We have support around this area. We have support here. There's wicks. Not really super confident on sells unless there is volume that comes in. Yeah. Okay, sells will make sense if I break somewhat of this trend line here, right? Sells break and retest of 5160.
something like where is the arrow? Not this arrow. Actually, that should be fine. What if I don't want to do an arrow just yet? Can I do just a line? Trend line. Yeah, something like this should be okay. That is what I'm looking for. नहीं भला आज तो मार्केट डाउन जा रही है ना वॉर की वजह से नहीं वॉर की वजह से मार्केट जो है ना कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट को जो होना था हो गया मार्केट बिल्कुल ठीक जा रही है फिलहाल लेट्स सी वॉर की वजह से वॉर खैर वॉर जो है ना मार्केट को मेटल्स को प्रेशियस मेटल गोल्ड सिल्वर इन चीज़ों को ऊपर लेके जाती है गोल्ड इतना ऊपर जा चुका है गोल्ड ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है पिछले साल डेढ़ में किस वजह से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेंशनें दुनिया में चल रही थी तो ये भी हो सकता है कि ये जो ईरान वाली जंग है ना ये इज़राइल ने अमेरिका ने काफ़ी अरसे से प्लान की हुई थी तो जिस तरह टेंशन बढ़ रही थी गोल्ड ऊपर जा रहा था इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो गोल्ड पहले ऊपर गया है वो इस टेंशन इस प्रेडिक्शन की वजह से भी गया जा सकता है कि भाई जंग होनी है राइट तो जब जंग होगी ना फॉर एग्जांपल जब अब हो रही है और गोल्ड पहले ऊपर जा चुका है तो वो उसको कहते हैं प्राइस टेन जंग पहले ही प्राइस टेन हुई हुई है मतलब कि जंग जो ऊपर जाना था ना वो पहले ही ऊपर जा चुका है इसलिए गोल्ड इतना रिएक्ट नहीं किया possibility that's a possibility right so let's see Zenitsu daily time frame looking good one thing I told one of my friends to buy is oil was good because Iran controls 25% supply of oil in the whole world they are blocking the supply which will make oil prices skyrise so in the last let's say like look at the difference between all of these candles very small like slowly trickling down and look at last week this is war this is where things get affected yeah it has gone up quite a bit so we talked about it when market was closed
It's gone up 15%. That's a lot for oil. As you can see, it moves very slow. It moves slow. But because we're coming up into these resistance areas, I would anticipate for price to retrace back, and that would be a buy. पेट्रोलियम के ऊपर ही करेगा अब, यानी हाँ पेट्रोलियम या दुनिया की गैस, अगर ईरान से आप लोग गैस ले रहे हैं ना, और या तो इन्हीं के जहाँ से भी सोर्स है वो पीछे ईरान सप्लाई कर रहा है गैस, देन इट्स गोना बी एक्सपेंसिव. चलती रही तो ये 15-30 तक हो जाएगा. 15-30 क्या, 15-30. We're back at our simple analysis. Yeah. गला पका हुआ है मेरा. Oil 15% बढ़ा है ना, या 15 से. हाँ वही ना. I mean, एनालिस्ट कुछ कह रहे हैं कि ऑयल जो है ना ऑल टाइम हाई पे जाएगा. अब डिपेंड करता है कब तक वॉर चलती रहेगी. इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. लेकिन अब वॉर आज ख़त्म भी हो जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीज़ें नॉर्मल होंगी. जैसे ऑयल की सप्लाई दोबारा फिर शुरू होगी उस राउट से. इतना आसान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इज़राइल चाहती है कि मैं कब्ज़ा करूं ईरान पे. ईरान इतनी आसानी से कब्ज़ा देगा नहीं. तो इतनी नहीं कि ना आसानी नज़र नहीं आ रही कि वो अपना कनाल का कब्ज़ा दे दें. मेड लो फ्लू भी है तुझे. यस. दवाई खाई है मैंने. There is no volume. There is no volume. I'm pretty sure before New York session, so maybe in an hour and a half, there is going to be a lot of volume. And that would be something to trade. अब ख़त्म नहीं होगी. हाँ देखते हैं क्या सीन है. अपनी शादी का टाइम आया तो वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है. क्या बात. If gold goes back to the actual volume it used to trade at, this is it. You see how, so for example, you see how big these candles are, right? Like you have this biggest candle, 180 pips. Basically it means that it moved a lot. Let's just say it moved a lot. It consolidated a little bit and then moved again. 200 pips. So that is the crazy time in gold. Whereas back in, like, before all of this started happening, 2-3 months ago, this was the average gold volume. That one candle was 25 pips instead of 200. It's 25. बाजी रिश्ते पक्के हो अपना और यहाँ जा रखे हम हाँ जी ऐसे ही है.
रिश्ते पक्के हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, अदर जंगें लग रही हैं। मैंने अपनी टिकट जो है ना वापसी की नहीं ली थी पाकिस्तान की ना, कल मैंने ली है। और लेकिन कल मुझे फिर बड़ी ढूंढ के एक अच्छी टिकट मिल गई, वरना मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि पहले टिकट काफ़ी महंगी नज़र आ रही थी। अच्छा, तो मैंने कहा यार अच्छा चलो, अभी महंगी है तो बाद में शायद थोड़ी सस्ती हो जाए, किसी दिन मैं ले लूँगा। कल सुबह उठ के देखा, तुर्किश एयरलाइन ने अपनी टिकट 2-3 गुना बढ़ा दी है। और फिर मैंने जाके कोई रिसर्च वगैरह की, फ़िल्टर वगैरह लगाए, और मुझे फिर एक कोई सही टिकट मिली। वरना इस जंग ने ना कसर कोई नहीं छोड़ी। ओह, أفلح العذاب يوم القيامة. हर बार रिटर्न लेते थे उस टाइम ले लेते यार। इस टाइम मैंने रिटर्न इसलिए नहीं ली, अभी तो और रेट ऊपर जाएगा। हाँ, वही मुझे लग रहा है। डिपेंड करता है अब, ये नहीं कि हालात जल्दी ठीक हो ना हो। अ, मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे डेट्स, वापसी की डेट्स कंफर्म नहीं थी। तो जब मुझे कंफर्म हुई डेट, तब प्राइस महंगी थी। मैंने कहा अभी छोड़ देते हैं। आहो। लेकिन पता क्या सीन है अभी, रेट्स ऊपर जाएंगे ना। वो अभी रेट्स तो ऊपर जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। लेकिन यार, यूएई का एयर स्पेस 1 महीना बंद रहना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने टाइम दिया ना कि 4-5 हफ्ते यानी कि बंद रह सकता है। बहुत ज़्यादा इनका नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी देर बंद रहना नहीं चाहिए। अब क्या डेट है वापसी की? 9 तारीख, 9th। चल कोई नहीं। आहो। झाग की वजह से जंग? क्या कहना चाह रहा है? झाग जंग की वजह से जंग लंबी जाएगी? झाग की वजह से? चल रोज़ा खोलना है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। يضاعف له العذاب يوم القيامة. Alright, we've got about 7 minutes to close this 30-minute candle. Um, there is no bias right now. Honestly, there is no bias. It's just all consolidating right now. You see, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours of consolidation so far. यूएई के एयर स्पेस बंद है ना, उसका क्या? यार यूएई की एयर स्पेस बंद है,
इसकी वजह से शायद इन्हीं के वॉर जो है ना कम हो, क्योंकि कब तक बंद रखेंगे अपने एयरपोर्ट को? पूरी दुनिया यूज़ करती है यूएई, इतना आसान थोड़ी है बंद रखना। दोनों न्यूज़ मेरे हैं, ये चलते रहेंगे। ओके ओके। मुनीब न्यूज़ चैनल। चलो, yeah, so last 1 2 3 4 5 6 hours। वो रोज़ा खोल ले जाके तू। Last 6 hours जो ओ अच्छा, दोनों व्यूज मेरे हैं। ओ ना, अगर मैं कह रहा हूँ एक कोई और देख रहा होगा। आय बढ़ गए भाई। चलो, बॉय सपोर्ट कर रहा है दो दो फोन से। लेवल है। ओए يضحى له العذاب. Yep, that's me.
वो बना हुआ है, क्या खूबसूरत स्काईलाइट स्पेस है, सारी सारी बैठने की स्पेस। उसके बाद ये आर्टिफिशियल ग्रास कवर्ड है। यहाँ पर आपको मिलता है वाटरफॉल। जितनी भी टैंकी है वो आपको नजर नहीं आएंगी क्योंकि उसको प्रॉपर ग्रिल अप करके कवर किया गया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर किचन स्पेस मौजूद है, बारबेक्यू का सेटअप हो सकता है। ये 31.5 मरले का घर है कमोड के साथ छत के ऊपर। उसके बाद व्यूअर्स 31.5 मरला के घर के अंदर आपको सोलर पैनल भी मिलता है। ये आपके ही घर का हिस्सा है, कोई दूसरे घर के अंदर नहीं जा रहे। बाहर में खुलना है, ये चेक करो, सोलर लगा हुआ है, जबरदस्त किस्म की स्पेस, एसी का अलग से सेटअप। लेकिन ये जो जगह है ये रूफटॉप गार्डन के साथ 4 फ्लोर फुली फर्निश्ड बाय विंग चेयर, स्पेनिश ब्राजीलियन टर्किश स्टाइल के साथ ये घर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 39 करोड़ रुपए के अंदर। वो तो मेरी इतनी कैसी गई है कि मुझे तो लग रहा था कि अच्छा मैं उसे बंद कर देना चाहिए। ना ही सही बेक हुआ है और ना ही कोई चीज है, पीने का सीजन नीचे स्लाइस डाले उसकी रीजन है ना सर कि इतनी फिलिंग आपको कहाँ मिलेगी। ये हम लगाएंगे, आप फिक्र मत करेंगे। आप कंप्लेन आई है, कंप्लेन हम कल भी की है, सब कुछ अच्छा है, 2 पक्की है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्लिप होके गिर जाते हैं, सारा मटेरियल गिर जाता है। मटेरियल जो है ना पिज्जा के साथ लग नहीं, तो क्या वजह हो सकती है? मैंने नारा ज्यादा है। हाँ मैंने नारा को वो स्लिप कर जाती है। मैं नारा वो तो मेरी इतनी कैसी गई है कि मुझे तो लग रहा था कि अच्छा मैं उसे बंद कर देना चाहिए। नहीं आप किसी को भी नहीं कर सकते सेटिस्फाई, क्योंकि अब आप जिनको पता टेस्ट का वो तो अपनी चीज पैक करके चलेंगे। आपका वो इशू, एक उनका ये भी इशू आया था कि वो कहते कि जब हम स्लाइस उठाते हैं तो हैवीनेस की वजह से सब कुछ गिर जाता है। ये तो अच्छी चीज है, उनके हिसाब ये तो लोडेड है ना, हमारे साथ तो नहीं। और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि लोडेड हर जगह मिलता है तो आपको ये अलग चीज नहीं देती। ये भी मैं आप जानती खाली पिज्जा बेचना शुरू कर दें, हूँ। पिज्जा विदाउट चीज। यार शहजादे शहजादे परफेक्ट। अब ये वीडियो ना ये और वो दोनों कट एक साथ लगेगा ताकि पता हो कि एक ही टाइम पे डिलीवर हुआ है और दोनों का जो फीडबैक है ना वो अलग है। वो तो मेरी इतनी कैसी गई। We were effectively unable to push February to March. The question now becomes, okay, how do we reconcile the execution shortfall from last month to shore up our broader Q1 performance target? Right. So now yeah, let's dig into that. Yeah, go ahead. When we look at Q1 from a quarterly perspective, right? It's clear that if we fail to close the attainment gap created by February, we risk underdelivering in the first quadrant as a whole, right? So now, Awesome framing there. Yeah, just to take it a step further, right? If our February output delta isn't absorbed within the March window, our quarterly benchmark will collapse, right? So now it's just really like how quick, to not to take us down Yeah, a rabbit hole here, but I do want to highlight that our deficit from February remains embedded within the Q1 production threshold. Right, so we were effectively unable to push February to If you got a Masoud will take me to senior children. Masoud, wait. This food, Masoud. Oh, look at that retracement. Look at this retracement. مسعود يلا رايحين نشوف ولاد مسعود ايش قاعدين ان شاء الله يكونوا حلوين زيك. خير هون مسعود. استنى مسعود وين؟ يلا مسعود وين Where is kids مسعود؟ يلا كم. ما شاء الله ما شاء الله مسعود. How many? ما شاء الله 1 2 3 5 ما شاء الله مسعود have 5 ما شاء الله very beautiful. مسعود good mom. food مسعود بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بس مسعود very beautiful. if you lift, that's not regular acne on your back. डायरेक्ट उकाड़ा से यार थैंक यू सो मच का बहुत 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 शुक्रिया। पक्का उकाड़ा से गाड़ी का नंबर, गाड़ी तो लाहौर की है लोग। वीडियो देख के उगाड़ा का वीडियो देख के भाई, वीडियो हम स्पेशल वीडियो देख के आए हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करने हैं। आते जाते 4 companies
you still believe that COVID-19 was actually about a pandemic? Who was in charge of the CDC that was controlling and telling our government to shut down small businesses and what they recommend for the mandates of the vaccines and Pfizer and all this? The director of the CDC was Rochelle. Never, and I mean never, ask, how are you? How are you? How's work going? Any plans for this weekend? I'm not 20 anymore. I'm 47. I do small talk training for 9 minutes a day. Now I build business relationships easily, and my boss asks me for advice. If you want to actually sound smart and take leadership, train your small talk. How to become more confident in small talk by training it the same way you train any other. Let's see if we have 8 minutes for this 15-minute to close, right? Seems like the direction is sells. Honestly, I do believe this candle could continue further down. I would greatly appreciate if we can close somewhere in this middle range and then have a wick up. डैडी से बोला तू गलती है मेरी तुझ पे रात की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग 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 भाग भाग भाग. What do we do? Should we, you know what I'm gonna do is I will look for opportunities to get in now because I want to leave. But look at the accuracy of where I wanted it to come down to. It's insane. This kind of accuracy comes with experience. So yeah, now I'm thinking about getting into cells. I'll actually place cells here. So I've gotten into cells with the let me change the screen. All right. So I've gotten into cells. The reason being is that I've got a good price entry. I'm anticipating price to continue to push down. And with that being said, I'm currently about 20 pips in profit. 1 hour is looking like it's gonna be bearish. So overall sentiment is bearish. Why is this capturing like this? Okay, this should be fine now. Yeah. So we are 40 pips in profit. Amazing. Amazing. I'm gonna close it right here. Perfect. Boom. My goodness. Not even a minute in a trade. Maybe like a minute. And we're done for the day. This is what happens when you wait, you execute your plan, and you say goodbye to the market. So